what is your proudest accomplishment? The Mrs. India beauty pageant as well. It's not the color complexion. To not be in the beauty industry, Right. wherever you go, it's your personality Sir. जो आपको stand out करती है. Right. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूँ आपके साथ में वेद और वोकल फॉर लोकल के एक और एपिसोड में आपका करता हूँ इस्तकबाल. दोस्तों, आज हमारे साथ इस एपिसोड में ऐसी मोहतरमा हैं जिनकी उपलब्धियों की लिस्ट, अचीवमेंट की लिस्ट काफ़ी लंबी है. शी इज़ अ कम्युनिटी लीडर, ऑल्सो काउंसलर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, head of cultures at ICC, Indian Cultural Center, and also Mrs. India Beauty Pageant 2023. Ladies and gentlemen, Khawateen Hazrat, please welcome Suma Mahesh Gowda ji in the studios of FM 107. Thank you so much. बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ invite किया, and I'm really honored to share my thoughts with you. Fantastic. Yeah, it's our pleasure to have you. So, Suma ji, इतनी सारी जो उपलब्धियाँ हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपने अचीव किया, इतने सारे जो रोल्स हैं, वो कैसे मैनेज करती हैं आप, यू नो, ऑल अलोन? इट मस्ट बी डिफिकल्ट, राइट? It'll be a lie if I say ये सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं, बगैर किसी के सपोर्ट के, बगैर वॉलंटियर्स के सपोर्ट के, विदाउट द प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ वर्क, आई डोंट थिंक कोई भी इतना अचीव कर पाएगा. तो आई गिव ऑल क्रेडिट टू जिसने भी मेरे साथ खड़े होकर सपोर्ट किया. वो फैमिली हो सकती है, मेरी माई सीनियर लीडर्स जिन्होंने मुझे मेंटर किया है, गाइड किया है, ऑल द वॉलंटियर्स, सपोर्टर्स. आई तहे दिल से शुक्रिया उन सबको कि अगर मैं यहाँ इतना अचीव कर पाई हूँ, इट्स एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट. तो इट्स लाइक अ टीम वर्क. एब्सोल्युटली टीम वर्क. जी बिल्कुल. टीम के साथ ही सारी चीजें अचीव हो पाती हैं. देखिए, आप हेड ऑफ कल्चर्स भी हैं जी आईसीसी में. जी. कौन सी इवेंट्स, अगर इस साल के हवाले से बात की जाए 2023, बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ एक्सपो 2023, राइट? ऑल्सो उसके बाद AFC एशियन कप है जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है. तो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनका जिम्मा आपके कंधों पे है? पिछले साल हमने आज़ादी की 75 इयर्स कंप्लीट एब्सोल्युटली जी. एंड इस साल इट्स ऑल अबाउट द 50 इयर्स ऑफ इंडिया एंड कतार डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बोलते हैं, राइट? So we have the biggest event which I think Indian Cultural Center takes big pride in is Passage to India बोलते हैं, जो मियाँ पार्क में होती है. Okay. The amount of crowd we get, whether it's Qatari or any non-Indian crowd, apart from the Indian crowd बोलते हैं, it's amazing the way वो इतना प्यार दिखाते हैं इंडियन कल्चर को देखने के लिए, इंडियन परफॉर्मेंसेस, इंडियन म्यूजिक को सुनने के लिए. That Passage to India is something everybody looks out to, which is lined up in December. Okay. Inshallah, with all support. And apart from that, there are many other which we conduct in Indian Cultural Center itself. Okay. To promote the Indian cultures in Qatar. ओहो. तो ये हेड ऑफ कल्चर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितना डिफिकल्ट होता है उसको मैनेज कर पाना? कुछ नए थॉट्स लेकर आते रहना, कुछ नई एक्टिविटीज प्लान करते रहना. What exactly? बिल्कुल, जो भी आपने बोला सब सही बोला. It's not easy to be the head of cultures, right? Especially when you have the responsibility जहाँ आपको इंडियन कल्चर को showcase करना है with a lot of perfection, without showing anything wrong, staying in Qatar, making sure you're abiding by the law of Qatar. ये सब जिम्मा होता है. And एक या दो टीम नहीं होती है जब हम culturals करते हैं. Right. We have teams from 80 to 120 जो हम delegate करते हैं. The amount of coordination जो करना पड़ता है, the amount of volunteers जितना handle करना पड़ता है, it's not easy, but actually end of the day सब सही हो जाता है because that's the amount of Indian community support we get from all the associations under the Indian Cultural Center. Indian Embassy भी बहुत support करती है. जी. And yes, it's a pleasure and privilege to be the head of cultures जहाँ पे हमें बहुत occasions मिलते हैं to interact with the Qatari community from various streams. Absolutely. क्या बात है. I think it's God's blessings. And Suma ji, recently you won Mrs. India Beauty Pageant. ये कैसे आपके जहन में आया, या इट वाज आल्सो देयर कि यार एक अचीवमेंट मुझे ये करना है, मुझे मिसेस इंडिया ब्यूटी पेजेंट लेकर आना है? सो हाउ वाज द स्टोरी, लाइक फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड? आई विल. थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. This month is all about mental awareness. So I would love to share my story, why I got into Mrs. India. Right. I'm never somebody who's into beauty. Sir. Never. It's not my bucket list to take part in किसी भी beauty pageant में हिस्सा लेना. ये मेरे bucket list में ही नहीं था. But चंद महीनों पीछे, before I could take part in the pageant, मेरी पहली बच्ची मेरी दिया
जहाँ पे हम रहते हैं हाँ वहीं पर ही उसको किसी ने उसको बुली किया गया था क्योंकि वो डस्की कम्प्लेक्शन थी. एंड मी एज अ काउंसलर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये मुझे बहुत चोट लगी. दैट एज अ मदर माय चाइल्ड वाज बुलीड फॉर हर कलर एंड कम्प्लेक्शन. राइट. एंड उसको बहुत इम्पैक्ट हुआ मेरी बच्ची पे. It's a very emotional moment we all went through. Because that's the amount of bulliness they gave her. And she was just 8 years then. Oh my goodness. And बार-बार वो वही बोलती थी कि, and I have a son who's on the fairer side. Okay. And my daughter is on the duskier side. Okay. And her confidence dropped. She didn't feel like doing anything because she was so scared she would be bullied again. Okay. तो वो बार बार आके बोलती थी, मम्मा मेरी कम्प्लेक्शन की वजह से मैं कैसे कुछ अचीव कर पाऊंगी. Right. And one of the stagnant bullying points was that you cannot be a model because you're dusky. Okay. तो उसको ये बोल के भी छेड़ा गया था. तो आई सेड, सी डार्लिंग, मैं भी डस्की हूँ, मेरी कम्प्लेक्शन इतनी गोरी नहीं है. एंड ब्यूटी पैजेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको खूबसूरत होना है, आपकी पर्सनालिटी खूबसूरत होनी है. ये मैं इस कंपटीशन में भाग लेके आपको दिखाऊंगी. एंड इंशाल्लाह इफ आई विन, आई वांट यू टू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक. ओके. Sorry, I'm getting emotional, but that's the whole reason I stepped into Mrs. India beauty pageant. Oh, nice. And though a lot of people kept calling me before, and I said, this is not my forte. मुझे ये सब नहीं करना अपनी लाइफ में. But जब मेरी बच्ची के साथ हुआ, I got back to them and I said, I want to do this. I want to do this for my बच्ची. Right. So that not just my बच्ची, but हर कोई वो बच्ची जो ऐसी बुलिंग की शिकार हुई होगी. जी. ताकि उसको लगे कि she's also dusky, but she made it to Mrs. Absolutely. India. And God's blessings, I won it. And I'm really feeling good about it. Gratitude to the universe that pageant chose me on the grounds of a best personality and not on my looks or my complexion. Right. So my daughter witnessed that when I was getting the crown. Right. Of course she cried. I too cried. But that was the whole purpose of doing Mrs. India, so that I can make a difference to those, who feel maybe they're not fair inferior, enough to do. Yes, right. And I also wanted to put an end to the bullying aspect, that it's not the color complexion, to not be in the beauty industry. Right. Wherever you go, it's your personality. जो आपको stand out करती है. Right. So that's the personality whole that matters. Absolutely. तो एक माँ की तरफ से उसकी बच्ची का खोया हुआ कॉन्फिडेंस लाने के लिए था. वाह, मानना पड़ेगा. माँ तुझे सलाम. सुमा जी, फैंटास्टिक, ग्रेट जॉब. And मैं ये भी बोलना चाहूंगी, एक्चुअली जब वो पैजेंट विन होने के बाद, the way my daughter's confidence shot up, वो स्कूल में प्रीफेक्ट बन गई. Okay. The way she spoke, the way she handled, I felt मैंने सही किया. Oh, nice. मतलब आप निकल पड़ी थी उस राह पे कि यार नहीं, बच्ची का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लाना है. Fantastic, great job. So now she's superb, supremely happy. She's really. तो क्या प्रिपरेशन लगी इसके लिए? And how long you spent to become Mrs. India beauty pageant? मैं सच बताऊं, मुझे टाइम ही नहीं मिला था because I was contributing a lot towards social service. Community में बहुत active थी, तो ये हम बिल्कुल नहीं कर पाए. Okay. There was no preparations कि ये करना है, diet follow कर. To be honest, मैंने कुछ नहीं किया. Okay. I just went and I was myself there. Okay. Just myself. Okay. That's it. I think that's very important, to be yourself. Honest, yes. और यही आई थिंक जज करते हैं वो लोग, कि आप कितने अपने आप को एक्चुअल दिखा पा रहे हैं. I just went the way I was, how I was, and I was my genuine self there. Okay. I had no time to prepare anything. Because it was on the spot, hardly any time to register, and I quickly flew. Okay. And it was in India, so it was difficult. I just managed it. Oh, fantastic. But mabruk, alf mabruk. Thank you. हमारी तरफ से, और ऐसे कॉम्पिटिशन्स आप और करती रहें. और अगर किसी भी ऐसे बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो पेरेंट्स कैन प्ले रियली इंपॉर्टेंट रोल to give their confidence back. Fantastic. Acha, you're also as you mentioned right now, you're also involved in a lot of philanthropic activities. तो क्या करती हैं सुमा जी? इवन बिफोर मैं हेड इन कल्चरल्स का पोजीशन लेने से पहले भी मैंने काफ़ी कम्युनिटीज़ में, एसोसिएशंस में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है फॉर ऑल कल्चरल इवेंट्स, बेनेवोलेंट कॉजेज, एंड many I wouldn't be able to shortlist anything in particular, but जहाँ पर भी उनको लगा कि मेरी एक्सपर्टीज उनको हेल्प हो सकती हैं, I have done and given my best. Oh, nice. अगर इस पूरी जर्नी में देखें अब तक की, what motivates you the most?
एवरी टाइम वी कंट्रीब्यूट हर सोशल सर्विस में कोई भी कॉज में जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेट मी टेल यू इट्स नॉट इजी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ कम्युनिटी सर्विस में जब हम हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें जगल करनी पड़ती है एंड ऑल दीज थिंग्स, बट वो करने के बाद जब लोग आके बोलते हैं कि मैडम यू मेड अ डिफरेंस एंड दे एक्नॉलेज इट, एंड जब वो ब्लेसिंग्स या दुआ देते हैं, दैट मोटिवेट्स मी। आई फील कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेक्स द वुमेन इन मी हैप्पी, मेरे अंदर की जो वो औरत है वो खुश हो जाती है। जी। तो मुझे आई थिंक ये बहुत मोटिवेट करता है जब वो दुआ देते हैं और एक्नॉलेज करते हैं। आई थिंक नथिंग मोर देन दैट। एब्सोल्युटली। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, पावरफुल हो तो दुआ ही होती है, जी बिल्कुल, है ना। वो आप किसी के लिए भी कभी भी दे सकते हैं। एंड इसी वाले से अगर बताऊं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गिव बैक या पे बैक टू सोसाइटी? जब मैं इंडिया में थी एंड आई वॉच्ड मेरी मम्मी पापा डू समथिंग इन देयर ओन स्मॉल वे वेयर वी लिव्ड इन आवर ओन कम्युनिटी इन दैट स्मॉल प्लेस, एंड व्हेन आई गॉट मैरिड एंड केम टू कतार, मैंने अपने हस्बैंड महेश गौड़ा, हु इज अ वेल नोन कम्युनिटी लीडर यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कम्युनिटी डेवलपमेंट फोरम में थे, एंड करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ अनदर एसोसिएशन। मैंने उनको देख के बहुत सीखा है। अच्छा। उन्होंने बहुत गाइड किया है। आई थिंक द वे ही डिड इट with a big heart, it's not easy to contribute and give a lot of time towards such a work. तो उनको देख के आई थिंक दैट्स ही इज द मेन इंस्पिरेशन फॉर मी टू बी इन कम्युनिटी सर्विस। सो मिस्टर महेश इज बिहाइंड। सो एवरी सक्सेसफुल इंसान, शख्स के पीछे, मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एंड इट्स अ वाइस वर्सा। इट्स वाइस वर्सा एज वेल। टेक द क्रेडिट। सो मिस्टर महेश, थैंक यू सो मच इतना कुछ करने के लिए। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज? आई गेट अप अर्ली, आई एम अर्ली बर्ड, आई गेट अप बाय 4:30, राइट। ऑर्गेनाइज द होल डे फॉर माय फैमिली, जो भी चाहिए ताकि उनकी कोई भी स्केड्यूल्स डिस्टर्ब ना हो, राइट। And when I wake up early, there's a lot of time that I get even before I go to work. As I said initially, beginning में ही बोला था कि काफ़ी work मैं delegate करती हूँ, तो it helps me in organizing the evenings, community work या meetings जो भी हैं। तो यहाँ पे प्री प्लानिंग बहुत करते हैं हम, तो बस ऐसी हेल्प हो जाती है। हमारी कोलीग्स आईसीसी में बहुत हेल्पफुल एंड सपोर्टिव हैं, तो अगर किसी भी कारण मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कोई भी काम, आई रिक्वेस्ट देम और वो कर देते हैं। तो इट्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट। Either I am organized by waking up early and I am delegating it with a lot of support. Beauty pageant जब आदमी बनता है, so there are a lot of question answers as well. Absolutely. Right? Yeah. अगर मैं कुछ questions आपसे यूं ही पूछूं कि if I ask you to describe yourself in just one statement, one sentence, वो क्या होगा? I think bold and beautiful from within. Okay. B&B, yeah? Yes. Bold and beautiful. Yes. Fantastic. Do you like any art form? All art forms. All. Actually, I'm an adventure girl. I've come from a sports background. Okay. So I like a lot of martial arts. Kalari poetry मुझे बहुत पसंद आती है. Okay. These kind of arts. Okay. Yeah. Martial arts. Martial arts, I like them. और अगर इनकी बात की जाए, singing, dancing, या different dance forms. I love all dance forms, but somewhere मेरा दिल कुछ ज़्यादा धड़कता है for the art forms, the adventurous art forms. Adventures. Yes. So you're also a martial artist, huh? No, I'm not, but that's one of my bucket list. Okay. Yes. Okay. But I've done a lot of bungee jumping. I've done skydives in Dubai and here. Any special adventure near in Qatar? No, I've done it in Dubai. I've never had, maybe because I'm too occupied in Doha. मैं कर नहीं पा रही हूँ. Okay. The skydiving. जी, skydive. You did. किया था, yes. Oh, nice. जी. So how does it feel when you've fallen from the sky? Of course, दिल धड़कता है, but that's what you go. That's to the rush, do. huh? Yeah, Adrenal that's rush. the rush. Oh हम my वही तो God. देखने जाते हैं. And ऊपर से जब गिरते हैं, the नज़ारा वो beautiful है. The bird eye view. जी बिल्कुल. And that's the moment you feel gratitude to life कि mashallah, God's really given us a good life, and we should show gratitude to the universe and to the God Almighty. So if I ask you every day, for what you are thankful for? To be blessed with a family, to be blessed with the ability to give back, to work and to give back. I think this is what I thank every day, to be blessed with a family and to be able to work and to be able to make a difference is what I thank har roz. Every day. जी. And cooking, do you like cooking? No, let me be honest, इतना पसंद नहीं है मुझे. But हाँ, हमारी जिम्मेदारी हम कर लेते हैं. हाँ जी. मतलब क्या है कि अब इतना सारा काम है, अब कुकिंग में भी ध्यान देंगे, तो कैसे मैनेज हो पाएगा? And any favorite dish of yours? Nothing. I'm not very picky. No, anything. हर चीज़ सब चलता है. जी.
Any special dish you have tried somewhere in the world and you didn't like it? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. You like everything? या मैं सुबह उठ के पास्ता भी खा सकती हूँ, सुबह उठ के बिरयानी, कुछ भी, आइसक्रीम भी खा सकते हैं सुबह सुबह. तो I'm not at all picky with food. And until now, what is your proudest accomplishment? Okay, let me take it for the Mrs. India Beauty pageant pageant. as well. Yeah. That was challenging though. It was because it wasn't easy. How many participants were there? I think there were about 45 plus participants all over the world Oh. for the Mrs. India category. Yes. Oh, nice, nice. All were talented, all were beautiful, sab mashallah. I think, let me give the credit there. Mrs. India Yes, Beauty Pageant. yes. These days, you see a lot of people, they spend a lot of time on social media, right? When you looked at social media, जी. what first thing you noticed? कितने जॉबलेस हैं लोग कि सब पोस्ट करते हैं, यही लगता है जब हम सोशल मीडिया देखते हैं. Maybe it's also a job, like me also, me posting a lot of content. No, आप अपने काम पेश करते हो. Sir. You're sharing wisdom, you're sharing acknowledgements and achievements. ये अलग बात है. बट काफ़ी ऐसे सोशल मीडिया भी है जहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी फुर्सत है उनकी लाइफ में. Right. तो वो किचन में भी नाच रहे हैं एंड वो भी पोस्ट कर रहे हैं. Right. एंड किसी और के साथ कुछ बुरा हो रहा है वो भी पोस्ट कर रहे हैं. तो ये कुछ चीज़ें डिस्टर्ब करती भी हैं. एट द सेम टाइम आई एम श्योर दे शेयरिंग देयर ओन thoughts as well. Right. But yeah. And Suma ji, what are your some of goals which you're going to accomplish in coming days or years? I always want to write a book on my daddy. Okay. मेरे पापा बहुत बड़े ओलंपियन थे. Okay. 1956 मेलबोर्न, 1960 रोम ओलंपिक्स इन फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल खेले थे. His name is M. Kempaya. Okay. Yes, he's no more, but he was one of India's biggest midfielder that Indian football could ever have. Oh my goodness. Yes. So I always wanted to write a book on his achievements. It's almost on the verge of completion, and yes, that's something I really wanted to do. That's a great announcement on Vocal for Local. Huh? Yes. So when we can... Probably by Feb and March. It will be published. Yes. We wanted to release it while this Asian Cup was going on because he was also 1958 Asian Games player. Okay. 1958 में खेला था उन्होंने. Okay. So we thought it'll be a great occasion, but I think it will get delayed for certain reasons. But try at least you can विमोचन जो है उस दौरान कर दीजिएगा, मिलना बाद में शुरू हो जाएगा. बिल्कुल. It's a great opportunity and it is happening in Qatar as well. जी. India is also coming, so it's gonna be, वो कहते हैं सोने पे सुहागा मोमेंट हो जाएगा अगर उसका विमोचन हो जाएगा. So great. And I think इंडिया में फुटबॉल अब धीरे धीरे हो सकता है आ जाए. ऐसा भी अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 2036 के ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने की इच्छा जाहिर की है. तो आई मीन नाउ इंडिया इज आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स द गोल टू अचीव द स्पोर्ट्स इकोनॉमी आई गेस. सो नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने एक दूसरे सेगमेंट की तरफ. आपने जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने मेंशन किया सुमा जी, यू आर आल्सो काउंसलर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. What kind of problems these days women and children are facing mainly or commonly? कहीं ना कहीं women are empowered enough, but they do not celebrate it. ये हमने काफ़ी हमारे इंटरव्यूज़ में हमारे जब वो गुफ्तगू करते हैं प्रॉब्लम्स की, हमने ये कंक्लूड किया. द बॉटम लाइन इज कि काफ़ी टैलेंटेड हैं बट वो दे नॉट एबल टू सेलिब्रेट इट. कहीं ना कहीं वो बंदे हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और वो बैलेंस नहीं कर पा रहे. वी फील तो वी ऑलवेज टेल देम टू टेक टाइम आउट and to make way for their own empowerment. Kahin na kahin wo mental pressure, it's all about the mental pressures. It's about being rigid or not being open to life. You know? Right. Yes. We always tell them life, चाहे women हो या children, life perfect नहीं होती है. हर situation को आप positively लोगे तो you're going to feel good, your mind is going to be happy. But yeah, कहीं ना कहीं ये acceptance उनमें थोड़ा देर से आती है. So that's where we step in. We make things open up for them and make them take it in a very right spirit. Nice. So now we're moving to our rapid fire round. Okay. What word do you have a hard time pronouncing? I think all brands, fashion brands, which are all from Europe, I have a problem. Everyone has. Yes. Who's your hero? Jackie Shroff. Oh. What is your go-to pastime? Me and my bestie in Qatar. जब भी वक्त मिलता है कतार में जो भी कैफेज हैं हम कैफे हॉपिंग करते हैं. अलग अलग जो भी
कैफेज मिलते हैं कतार में, हम वी कीप ट्राइंग द कैफेज. Okay, exploring good ones. जी. Huh? What was your favorite subject in school? आर्ट एंड इंग्लिश दोनों बोलूँगी. What is your favorite type of weather? Winter. Anything with drums. A beat, you like Yes, beats. the beats, Okay, yeah, drums. yeah. But any specific? I like the music? bhangra. Bhangra. Yeah, and I like the Karnataka's dole, the Maharashtra's dole thasha. Okay, all these. Kerala state ka chandamelam. Yeah, जो भी drums है मुझे, I feel it. What is your favorite movie? In Kannada, America, I like that. Okay. जी. America. हाँ जी. That's a Kannada ka movie. जी. Oh. And what is your favorite food? Anything. I'm not so particular. I can say pasta. Yeah. Pasta? जी. Italian, huh? जी. Who's your best friend? Rita Kant, Qatar में. Acha. Hey Rita, hi. What is a good spy code name for you? They used to call me Dimple before. Okay, that's your spy code name? Yeah. 007 जी. Dimple? Otherwise याद है वो स्कूल में हमेशा केडी बोलते थे. Kerry. Agent Kerry. केडी. Yeah. Agent Kerry is speaking. Over and out. Have you ever gone viral online? No, never. You wanted to? No. What if this interview, Vocal for Local, go viral? Oh, I think it's God's blessing. I hope it's making a difference and it goes viral. Why not? Absolutely. What is your hidden talent? That I write poems. Oh, there's a hidden? Yes. No one knows? No one knows. If you were to write a book, which you mentioned before also, but Ji. what it would be titled? India's legendary midfielder, M. Kempaya. Oh, nice. Finish the phrase. The way to my heart is ... The way to my heart is to just spend simple and fun, loving moments with my family. Oh, wow. That's all. Would you ever appear on a reality show? Yes, it's on my bucket list. I would love to be in the Karnataka's Big Boss. Oh, yes. That's what I was talking, Do you have a bucket list? Yes, I do. You want to go to Big Boss, Karnataka? That's one of it. I wanted to be a writer, which I'm working on it. Okay. Wanted Two? to belly dance सीखना था. Okay. कोई martial art सीखनी थी. Okay. क्या बात है. बहुत शुक्रिया. Suma Mahesh Gowda ji, thank you for your time. Thank you. And मिलेंगे Passage to India. India.